Hello children, let's ahead our chapter number 15 models, and we have discussed first 4 models yesterday, and today we will discuss the next 4. The first model which we are going to discuss today is can. CAN, can. Can means to be able to. That means when you have ability of doing something. Can expresses the power and the ability, capacity of doing something, of being able doing something. कैन आपको बताता है कि आप किसी काम को कर सकते हैं. फॉर दैट सेंस बेटा, सकता, सकना, फॉर दिस सेंस वी यूज कैन. ओके, फॉर एग्जाम्पल, the first use, as we have discussed earlier, that when we are able to do something by showing our ability or power, ताकत. The principal can give admission. Principal admission दे सकता है. I can speak English fluently. This is the ability बेटे. Okay, ability क्षमता. यह कि वो इंग्लिश बहुत अच्छे से मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ. नेक्स्ट यूज ऑफ कैन, पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी संभावना. एनीवन कैन रीड दिस लेटर. हर कोई इस लेटर को पढ़ सकता है. एनीवन कैन मेक मिस्टेक. हर किसी से गलती हो सकती है. नेक्स्ट इज परमिशन. व्हेन यू वांट टू टेक परमिशन बेटा, देयर यू हैव टू यूज कैन. You cannot play in the yard. You cannot loiter here. Loiter to spread things here and there. Okay? तुम यहाँ चीज़ें यहाँ पर नहीं फैला सकते. तुम इस आंगन में नहीं खेल सकते. There is a slight difference between can and may. Definitely one thing came to your mind that ma'am, when we want to enter in the class, we used to say, ma'am, may I come in? May. But you are telling that regarding permission you have to use can. So there is a slight difference beta. If you are taking permission from elder, there you have to use may. And if you are taking permission of younger than you or same group age, there you can use can. I am repeating बेटे. अगर आपको किसी बड़े से परमिशन लेनी है, देयर यू विल यूज़ मे. अगर आपको अपने से छोटे या बराबर उम्र के सब्जेक्ट से आपको परमिशन लेनी है, देयर यू विल यूज़ कैन. नेक्स्ट यूज़ ऑफ कैन इज़ लीगल परमिशन. लीगल परमिशन मीन्स कि जब आप कानूनी तौर पर कोई परमिशन लेते हैं, यू कैन टेक योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी. आप अपनी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले सकते हैं. नेक्स्ट, डाउट और सरप्राइज. जब आपको किसी चीज़ पर डाउट होता है या सरप्राइज होता है. कैन पाकिस्तान रियली मीन पीस. क्या वाकई में पाकिस्तान शांति चाहता है. सो वी कैन से इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इन इंटेरोगेटिव सेंसेस, इफ देर इज़ अ डाउट, इफ देर इज़ अ आस्किंग बेटे, देर यू कैन यूज़ कैन. कैपेसिटी. कैपेसिटी क्षमता. दिस बकेट कैन कंटेन 12 लीटर्स ऑफ वाटर. इस बाल्टी में 12 लीटर पानी आ सकता है. क्षमता. ओके. नेचर. नेचर स्वभाव, बिहेवियर. शी कैन बी वेरी विटी एट टाइम्स. कि वो कभी कभी बहुत विटी हो जाती है, बहुत मजाकिया हो जाती है. सो दीज आर द सिंपल यूजेज ऑफ कैन बेटा. बट वन थिंग आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, while using can, just remember one thing, that if the sentence or the sense of the sentence is having a kind of ability, सकता है, सकना, okay, there beta you have to use can. Now let's move to our next model, that is use of could. But before moving ahead, here a note is given. Cannot is a single word and is used in negative sentence like never. दैट मीन्स कि कैन नॉट जो हम यूज़ करते हैं वो एक सिंगल वर्ड होता है. आप उसको कैन और नॉट अलग अलग ना लिखा कीजिए, और उसका सिंपल मीनिंग रहता है नेवर, कभी नहीं. ओके. नेक्स्ट मॉडल इज़ यूज़ ऑफ कुड. द फर्स्ट यूज़ ऑफ कुड इज़ टू एक्सप्रेस पावर और एबिलिटी इन पास्ट टेंस.
as you have done shall, should, will, would beta. Similarly can is the past form of could also. Okay, so पहला use could का है, that is कि when you want to show a power or ability beta regarding past tense. She asked me if I could help her. He asked me if I could drive a car. Here you can see beta the first part of the sentence, the direct speech is, the reported speech asked has been given. Asked, you all know second form here, that means the past tense beta. So here if I could help her आएगा, if I can नहीं आएगा. Okay. Second is ability in the past tense. सेम थिंग टू द फर्स्ट रूल बेटा, कि जो आपका फर्स्ट रूल है कि पास्ट टेंस की जब आप किसी एबिलिटी के बारे में बताते हैं, दैट इज़ योर कुड. ही कुड सिंग वेल व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. वो बहुत अच्छे से गाता था जब वो छोटा बच्चा था. ही लॉस्ट हिज पर्स सो ही कुड नॉट पे हिज फी. उसका पर्स गुम हो गया था इसलिए वो अपनी फ़ी नहीं भर सका. नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी इन द पास्ट टेंस. You can see beta that mostly all the uses are same just like the can. That means power and ability of past tense, ability in the past tense or possibility in the past tense. But another, the use which is different from can is fourth one, polite request in the present tense. Beta, when you want to make a request and that is very politely, there you have to use could. Okay, and here in would also we have used polite request, but there you just asked the things. Here you are demanding the things. Okay, polite request in present tense. That means कि जब आप politely request करते हैं present tense में, could you lend me some money? क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे? The last use of could is helplessness. Helplessness, मजबूर. Okay. They could not help giving money to the beggar. वे beggar को पैसे नहीं दे सकते थे. So these are the simple uses of could beta. There are similarity between can and would. So I told you in earlier also that in some sentences you may use more than one or two models also. Now next move is our model is use of may. First one, you all have used this while entering in the class, may. Okay, ma'am, may I come in? You used to say it. Okay, so the first use is regarding permission. You may see my pen. May we sit here? All two sentences are having the sense of permission beta. Next one is possibility. Possibility यहाँ पर जो रहेगी that is related to uncertainty beta. हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. दैट इज़ नॉट इन द हैंड्स ऑफ सब्जेक्ट. ओके, द PM में विजिट द फ्लड स्ट्रिकन एरियाज. बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो PM हैं वो विजिट कर सकते हैं. सो पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट इज़ पर्पस. पर्पस के लिए आप हमेशा याद रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज़ होता है. सिमिलरली जहाँ पर भी आपको सो दैट मिल जाए, यू हैव टू यूज़ मे बेटा. इफ़ योर सेंटेंस इज़ हैविंग सो दैट, देन बेटा इन द फिलअप यू हैव टू फिल मे. वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि, वी मे लिव, हम जी सके. शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे सक्सीड, वो मेहनत करती है ताकि सक्सेसफुल हो सके. नेक्स्ट इज विश और प्रेयर. वाइल डूइंग exclamatory sentences beta, we have done this. Okay, may she get a good partner. Here you can see that in the end of the sentence sign of exclamation has been given and a pray, a wish is also there. So this is your optative sentence. If you remember, we have done in the chapter of sentences optative sentence. Rule is service. Service, when you want to do something, okay, for someone. May I give you a glass of water? क्या मैं आपको एक ग्लास पानी दूँ? So these are the uses of may. First one is permission. You all very well known to this. Possibility, संभावना, that is not under the control of anybody. It may happen or not. Purpose,
So that you have to remember wish or prayer, optative sentences, and sign of exclamation in the end of the sentence. Service, when you ask somebody to do something for him or her. Now, the next model is might. MIGHT, might. As similar to can, could, might is the past form of may, beta. I am repeating that these 8 models are in 4 pairs, beta. Will, would, shall, should, can, could, may, might. So again you are going to discuss past tense of a model, that is of may. So use of might. The first use is as similar to could, would and should, the past tense of may. मे का पास्ट टेंस आपका जहाँ कहीं पर भी होगा आपने देयर यूज़ करना है माइट. फॉर एग्जाम्पल, ही रैन फास्ट सो दैट शी माइट कैच द ट्रेन. Here you can see beta, he ran. Because it is ran, the second form is here. That's why you have to fill might. And one more indication is there, that is so that. I told you that if you are having so that in your sentence beta, there you have to use may or might. If the sentence is related to present tense, there you have to use may, and if your sentence is having past tense, then you have to use might. He ran fast, वो तेज दौड़ा, so that ताकि she might catch the train. Sorry beta, here misprinting is here. Either both he will come or both she will come. Okay, so I am having second one, the he might catch the train, ताकि वो ट्रेन को पकड़ सके. Next is remote possibility. Remote possibility means when there are less possibility, जहाँ पर बहुत कम संभावना होती है. द स्काई इज़ क्लियर बट इट माइट रेन. आकाश आसमान बिल्कुल साफ है लेकिन बारिश हो सकती है. नो चांसेस आर देयर फॉर द रेन बट स्टिल इफ़ वी आर हैविंग अ पॉसिबिलिटी. ही हैज़ नॉट प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस तो नहीं किया था बट ही माइट कम, लेकिन वो आ सकता है. सो वेयर देयर आर लेस पॉसिबिलिटी, least possibility we can say beta, there you have to use might. Next use of might is to express possibility or permission in the past tense. Similar to may beta, जहाँ कहीं पर भी past tense की possibility और permission होगी, there also you have to use might. आप देख सकते हैं the tortoise said past tense is here, that's why you have to use might. और अगर यहाँ पर say होता says, the tortoise says, then beta you have to use may. He may. The captain said that we might play a match. Here said is there, that's why we have used might. But if there would be in place of said it is says, then you have to use may. The last use of might is suggestion. If you want to give someone a suggestion beta, then you can also use might. You might try again and again. तुम्हें बार बार कोशिश करनी चाहिए, तुम बार बार कोशिश कर सकते हो. So these are the uses of can, could and may, might beta. At your page number 131, exercise A, B and C has been given. Here you have to solve these exercises, and tomorrow I'll send you the answers of these exercises and you please match these. And you have to do these exercises only in your book, okay, not to do in your grammar notebook. Okay, thank you and take care of yourself.